Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. This is a grammar book and the name of your book is English Grammar Plus Skills and Least Work. So children, today we are going to do a new chapter and it is chapter number 7 of your book and the name of the chapter is Adjectives. So let's start with the chapter. So words that are used to describe a noun or a pronoun are called adjective. So वो words जो noun या फिर pronoun को describe करते हैं उनके बारे में और ज़्यादा बताते हैं, ऐसे words को हम adjective कहते हैं. Adjectives help us to know more about noun and pronoun by expressing their qualities. So qualities को express करके हमें इनके बारे में और ज़्यादा ये बताते हैं. So you have already learned about the various kinds of adjectives in your previous classes. Now let us learn more about some of the adjectives here. Either, neither, each, every, other and another. So here comes the first one. Either, neither, each and every are distributive adjectives. So ये distributive adjectives है. Singular nouns are used after these adjectives. So इन adjectives के बाद में हम singular noun यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय, अब ईच के साथ हमने क्या रखा है बॉय, बॉय इज अ सिंगुलर नाउन, वॉज गिवन 50 रुपीज. पीपल लिव इन आइदर साइड ऑफ द रिवर. सो अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आइदर के साथ हमने साइड यूज किया. नाइदर गर्ल केम टुडे एंड एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन एन ID कार्ड. सो जब भी हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं इनके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज करते हैं. If a plural numerical adjective comes after every, अगर every के बाद कोई भी plural या फिर numerical adjective आता है, the noun that follows will be plural. So उसके बाद जो noun लिखते हैं वो plural होता है. For example, every 6 months he is transferred. Every 2 days the sample is changed. Every 10 days the equipment is tested. Every 10 hours a new office is posted. So when we look at all these examples, हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, हर every के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, every 6, every 2, every 10 और every 10. So जो numerical adjective यहाँ पे यूज किए गए हैं उसमें क्या किया हमने, जो noun है वो plural रखा है हमने. So यहाँ पे आप देख सकते हो 2 days is used या 10 days या hours. Every 6 months is transferred. So here हमने आप देखोगे कि जब भी कोई नंबर आता है एडजेक्टिव के रूप में, इन द केस ऑफ एवरी, एवरी के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो हम जो नाउन रहता है उसे हम प्लूरल में लिखते हैं. एवरी इज यूज बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग अ बिग नंबर. सो एवरी हम कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे नाउन के साथ जो एक बड़े नंबर का. फॉर एग्जाम्पल एवरी सिटीजन of the country feels proud. Every soldier of the Indian Army should be brave. Each is generally used for 2 or more than 2 people or things. So each जो हम use करते हैं वो कब use करते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोगों या फिर things के लिए. Every is always used for more than 2. Every को हम हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए use करते हैं. For example, each worker out of the 3 had a spanner. Every student was examined. Each student in his class had a bicycle. Every employee was paid bonus. So आप यहाँ पे क्या देखोगे, जहाँ पे भी आपने each या फिर every use किया है उनके ये किस लिए यूज कर रहे हैं, each and is generally used for 2 or more than people. So यहाँ पे 2 से ज्यादा लोगों की बात यहाँ पे हो रही है. And every is always used for more than 2. और यहाँ पे आपने देखा है कि every जो है 2 से ज्यादा की जब बात की जाती है तब यहाँ पे हम every को यूज करते हैं. every student तब यूज किया है जब ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है. यहाँ पे भी each student in the class, हर एक बच्चे की बात हो रही है, बट यहाँ पे every employer कब लिखा गया है, जब एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स की बात हो रही है. नेक्स्ट इज either is used to mean one of 2 person or thing. सो आइदर जो यूज किया जाता है वो कब यूज किया जाता है, जब एक या 2 जो है पर्सन या फिर थिंग हो.
फॉर एग्जाम्पल आइदर हैंड ऑफ माइन वॉज, मेरा जो एक हैंड था, आइदर मीन्स एक हैंड जो है हर्ट मीन्स दो की बात है, देन वी आर यूजिंग हियर आइदर. यू कैन हैव आइदर हाफ ऑफ द एप्पल. सो एप्पल को हमने हाफ पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, उसके जो दो पार्ट्स हैं तो उन दो पार्ट्स की बात है कि आइदर एक पार्ट को आप ले सकते हैं. नाइदर इज यूज्ड टू मीन नॉट one nor the other of the two person or thing. So neither कब यूज करते हैं, जब हमें no या not का यूज करना है, मतलब किसी की भी बात नहीं होगी यहाँ. Neither shoe of Ria is torn. तो रिया की कोई भी शू यहाँ पे torn नहीं है. He will choose neither subject. So वो कोई भी subject choose नहीं करेगा. So at this time we have used here neither. The distributive adjective another is used before singular noun. So singular noun के पहले हम distributive adjectives use करते हैं और वो कौन सा adjective है, वो है another. And other before plural noun. और other को हम use करते हैं plural noun के साथ. तो singular के साथ हमें another use करना है और plural के साथ हमें other को use करना है. But other can be used before singular nouns also if the definite article is used. So अगर हम singular के साथ भी use कर सकते हैं, लेकिन कब use कर सकते हैं, जब एक definite article use किया जा रहा है, means the को use किया जा रहा है. I read another book. So यहाँ पे हमने another use किया है for singular. book के लिए हमने use किया है. Other books are also interesting. अब यहाँ पे books हैं, बहुत सारी books हैं, तो हमने यहाँ पे other को use किया है. Another reader took the book. Another यहाँ पे यूज हुआ है reader के साथ. And who has taken the other book? किसने other book ले लिया है, तो अब यहाँ पे book के साथ आप देख सकते हो कि other यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक definite article मिल रहा है, means the लिखा हुआ है. So the other book है, इसलिए हम यहाँ पे others नहीं लिखेंगे. Okay. This, that, these and those. This, that, these and those are demonstrative adjectives. This is used with singular noun and these with plural noun, denoting nearness. So this और these दोनों हम पास की चीजों के लिए यूज करते हैं. This is used for singular and that for plural. These for plural. Similarly, that is used with singular noun and those with plural noun, denoting distance. That जो है singular के साथ यूज होता है, those plural के साथ यूज होता है, लेकिन दोनों का मतलब होता है distance. This book is good. So this के साथ हमने book यूज किया है. Book is a noun. That child is playing. These books are words and those children are playing. So अब आप यहाँ देख सकते हो कि this हमने singular book के साथ यूज किया है. That is used with single child. These हमने plural books के साथ यूज किया और those भी हमने plural children के साथ यूज किया है. Now there are adjectives related mistakes in the following sentences. So यहाँ पे adjective related कुछ mistakes हो गई हैं sentence में. Rewrite the sentence correctly in the space provided. One has been done for you. So children, one example is given. Let's see what's written. I had already purchased these books. अब these के साथ book तो आएगा ही नहीं, तो क्या होगा? I had already purchased this book. Book के साथ हमें this ही लगाना है, these नहीं लगाना है. Neither schools are near my house. So अब neither के साथ schools नहीं लगेंगे. Neither school is near my house. So this is the answer, children. Like this, you have to complete the rest of the exercise. It's your homework. Next is much and many. Much and many are adjectives of quantity. So ये दोनों जो है adjective of quantity हैं, ये quantity को describe करने के लिए लिखे जाते हैं. Much is used before uncountable noun. Much जो है uncountable noun के साथ लिखते हैं. Many is used before countable noun. Many जो है countable noun के साथ लिखे जाते हैं. For example, he does not have much money. उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं. क्योंकि you cannot count money. Money को हम count नहीं कर सकते. That's why we have written here much. There were many people in the meeting. People को आप गिन सकते हो, लोगों को गिन सकते हो. That's why you have written here many. I have many friends. Friends को भी गिन सकते हैं. So we have written many. And we do not have much
time left. तो time को भी हम count नहीं कर सकते. So that's why we have written here much. Few, a few and the few. अब एक ही word है, आप देखो तीन तरीके से लिखे गए. Few लिखा गया है, a few लिखा है and the few लिखा है. Let's see what's written here. Few, a few and the few are used before countable nouns. ये तीनों जो है हम countable nouns के पहले use करते हैं. Few means not many, hardly any. तो few का मतलब हो सकता है होता है कि ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. It has a negative meaning. इसका एक negative meaning है. The few means a small number, but all that are there. So the few का मतलब होता है थोड़ा बहुत है. But all that are there, it is also have a positive meaning. So अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो इसका मतलब ये this is giving a positive meaning. Few students pass exam, not many means बहुत कम. तो इसमें जो है नेगेटिव एक मीनिंग निकल रहा है. A few students pass the examination means एक छोटे नंबर की यहाँ पे बात हो रही है. The few students who appeared in the examination passed it, but the number was small. So यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है और इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है. So this is the difference between all these three. Now little, a little and the little. जैसे अभी हमने few पढ़ा वैसे ही these three are here. Little, a little and the little are used before uncountable noun. ये भी uncountable noun से पहले लगाए जाते हैं. Little means not much. It has a negative meaning. A little means a small amount or something, थोड़ा सा. And it has a positive meaning. The little means a small amount, but all there is. It also has a positive meaning. So the little का भी मतलब है और थोड़ा सा ज़्यादा. For example, there is little water in the well, not much, and there is a little water in the well, a small amount. The little water in the well is not potable. So here the small amount, but all is considered here. A good many, a great many, and many, a and an. A good many and a great many take plural noun. So ये दोनों words जो है plural noun को लेते हैं साथ में, while many, a and an take singular noun. So ये दोनों जो words हैं ये जो है plural के साथ जाते हैं, लेकिन ये जो last वाला है many, a and ये जो है singular noun के साथ जाते हैं. For example, a great many employees have resigned. So यहाँ पे आप देख सकते हो a great many के साथ employees लिखा गया है. A good many students have played. So इनके साथ भी आप देख सकते हो students लिखा गया है. Many as Indians are illiterate. Many and Indian are illiterate. अब यहाँ पे आप देख सकते हो many लिखा गया है, तो यहाँ पे an Indian एक की बात हो रही है. Many a parent is worried about the child. अब यहाँ पे many a की बात हो रही है, means यहाँ पे हमने सिंगुलर पेरेंट को लिखा है, पेरेंट नहीं लिखे गए हैं. So this is all that we have learned in this. Now next topic is all, most, some and any. So यहाँ पे ये तीन चीजें हैं. Almost, some and any can be used with both countable and uncountable noun. So ये countable और uncountable noun दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं. Any is used with uncountable noun in question and negative statement. So any जो है हम uncountable noun के साथ यूज करते हैं question form में और negative statements. For example, all the students passed. All the milk is spilled. Most boys work hard. Most fast food is junk. Some boys are naughty. I want some water to drink. Is there any milk in the fridge? There isn't any milk in the fridge. So these are some of the examples that we have used, that we have made of these words that we have read here. Now there are adjectives related to mistake in the following sentences. Rewrite the sentence correctly in the space provided. One has been done for you. His all drinking water are finished. So here अब इसको हमने change कर दिया है, all को हमने his की place पे रख दिया है. All his drinking water is finished. So R को हटा के हमने yes कर दिया है.
Life is a long series of much cares and anxieties. So you have to do the same thing that we have done here. In the rest of the questions, you have to follow the same thing that was done here. You have to correct it and correct the adjective and rewrite the sentences here. Now next comes the positive, comparative and superlative degree. A positive, comparative or superlative degree क्या है? Let's see. Adjective have 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. The positive degree simply expresses a quality. Positive degree सिर्फ एक quality बताता है. The comparative degree makes the comparison between two person or thing. जो comparative degree है वो दो के बीच में comparison करता है. The superlative degree expresses that a person or thing has a quality of the highest degree among more than two person or thing. लेकिन इस superlative degree है वो क्या करता है? वो दो से ज्यादा के बीच में comparison करता है. Formation of comparative and superlative degrees of comparison. So let's learn how can we form comparative and superlative degree. To form the comparative and superlative degree, more and most are used respectively. So इनमें हम क्या करते हैं? More या फिर most को use करते हैं. Before the positive degree of some adjective. So कुछ adjectives हैं जिनका जो positive degree है उसके पहले हमें more या फिर most लगाना पड़ता है. Given below are some examples of such adjectives. So here positive degree, then comparative degree and the superlative degree is given. Let's read it. Active becomes more active and most active. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Careful, more careful, most careful. Famous, more famous, most famous. Handsome, more handsome and most handsome. Like this, the rest are given here, children. You can read it. To form the comparative and the superlative degree of some adjective. So comparative और superlative degree बनाने के लिए कुछ adjectives के we add er और est. हम क्या करते हैं उसमें er लगा देते हैं या फिर est लगा देते हैं. Are added to the positive degree. Positive degree में add किया जाता है. The following are some examples of such adjectives. अब नीचे कुछ example दिए गए हैं. Let's see. So here comes the positive, then the comparative, and next the last one is the superlative degree. So deep में हमने er लगाया तो बन गया deeper, deepest. Heavy, अब heavy में आप देख सकते हो y लिखा हुआ है, y को हमें हटाना है और उसकी जगह पे हमें I लगाना है and then we have to insert er या फिर est. So heavy बन गया heavy, heavier, heaviest. Hot, hotter, hottest. अब hot की spelling में क्या हुआ है कि already यहाँ पे t है, एक आप कह सकते हो कि एक consonant है. अब कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवेल आ रहा है, वॉवेल क्या है यहाँ पे ओ, तो हम क्या करेंगे कॉन्सोनेंट वाले लेटर को डबल कर देंगे. सो क्या हो जाएगा? हॉट की स्पेलिंग हो जाएगी हॉटर और हॉटेस्ट, डबल टी लग जाएगा. नेक्स्ट इज लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. नोबल, नोबलर एंड नोबलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. So some adjectives come form their comparative and superlative degree in different ways. So कुछ adjective हैं जो comparative और superlative degree में अलग जो है वे show करते हैं. So here is a positive, then comparative and the superlative degree. अब bad बन गया worse and worst. Far बन गया farther and farthest. Good, better, best. Late, later, latest. Little, less, least. Many, more, most. Much, more, most. So these are some of the comparative and superlative degrees. Now let's learn how can we use the comparative degree. While using the comparative degree, than is used after the adjective. So इसका जो एक main thing है ये पहचानने के लिए कि हमें इसमें comparative degree लगानी है या नहीं लगानी है, तो हम क्या देखेंगे कि sentence में than लिखा हुआ होता है. दो लोगों के या दो चीजों को compare करने के लिए than word आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल राम इज टॉलर देन राज. अब आपको यहाँ पे देन दिख रहा है तो टॉल में आपने ईयर लगा दिया है और कंपेयर हो रहा है राम और राज को कंपेयर किया जा रहा है कि राम जो है टॉल है राज से. शीला इज यंगर देन रीना. नाउ चेंजिंग कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव. अब कंपैरेटिव डिग्री है उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है. सो कैसे करेंगे? वी कैन चेंज द कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट अ चेंज इन द मीनिंग. सो कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं मीनिंग को बिना चेंज किए. फॉर एग्जाम्पल
Here the comparative degree is given. Tom is older than Sam. So comparative degree में क्या हो जाएगा? Sam is not so old as Tom. Similarly, in the comparative degree, India is bigger than Bhutan. Bhutan is not so big as India. So अभी यहाँ पे हमने as का use किया है, इसको positive degree में convert करने के लिए. A common mistake in the use of comparative degree. अब क्या हम common mistake करते हैं comparative degree में? Let's read about it. Look at the following sentences. The river of northern India are longer than southern India. So northern India का जो river है वो southern India के river से long. अब यहाँ पे क्या है? This sentence is incorrect. We are comparing the river of northern India with the river of southern India. And not the northern with the southern India. Hence it should be. अब इस क्वेश्चन तो गलत लिखा है. अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? The rivers of northern India are longer than those of southern India. So then southern India के जगह हम क्या लिखेंगे? Those of southern India. So this one is correct. Now see another example. The farms in India are smaller than America. So here the correct sentence is the farms in India are smaller than those in America. Now using the superlative degree, how can we use the superlative degree? Definite article the is used before the superlative degree. So जब भी हमें superlative degree का क्वेश्चन मिलेगा, हमें उसमें क्या मिलेगा? The लिखा हुआ मिलेगा. For example, Achilles the लिखा है and then clever को हमने ESC लगा के cleverest कर दिया है. Achilles the cleverest boy in the class. So पूरी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से सबसे ज्यादा clever कौन है? Achilles. China is the most populous city in the world. So पूरे वर्ल्ड में चाइना को कंपेयर किया गया पूरे वर्ल्ड की सिटीज कंट्रीज से और उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की. Now changing superlative into comparative and positive. Superlative degree को comparative and positive degree में change करना है. Ankur is cleverer boy of the class. ये एक superlative degree में है. अब उसको comparative में कैसे किया? Ankur is cleverer than any boy in the class. So object cleverer use किया गया है और उसके साथ than लगाया गया और किसी भी और boy से compare कर दिया गया. Now positive degree में कैसे convert किया गया है? No other boy in the class is so clever as Ankur. Similarly, Neha is one of the cleverest students in the class. Neha is cleverer than. अब यहाँ पे the नहीं आएगा. You have to remove this. Neha is cleverer than most other students in the class. This is the comparative degree, and very few students in the class are as clever as Neha. So this is the positive degree. Now we have to complete these exercises, children. There are mistakes of comparison in the following sentences. We write the sentences correctly in the space provided. Mysore's garden are more beautiful than Karachi. तो अब इसको करेक्ट करके क्या लिखा गया? Mysore's gardens are more beautiful than those of Karachi. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है the icebergs in Atlantic Ocean are bigger than Pacific Ocean. सेम करना हमें. The icebergs of Atlantic Ocean are bigger than those of Pacific Ocean. So we have done 2 questions here, children. Rest questions are your homework. You have to do on your own. So you have to complete all these questions. Now we can change the comparative degree into the positive degree using the structure as in affirmative sentences and so as in negative sentences. So हम क्या कर सकते हैं? हम comparative degree को positive degree में convert कर सकते हैं. as use करना है positive sentence में और so as use करना है negative sentence में. अब ये stronger than वाशु, अब ये तो एक comparative degree का sentence है. अब इसे हमें positive में convert करना तो हम क्या करेंगे? वाशु is not so strong as अभी. So अब यहाँ पे देखो आपने as का use किया है. वाशु is not so strong as Ankur. अब next है Delhi is hotter than Mumbai. Mumbai is not so hot as Delhi. Rosie is not more beautiful than Sonali. Rosie is as beautiful as Sonali. अब यहाँ पे दोनों हमने यूज किया as and as को दोनों
तो हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर कन्वर्टिंग इन द पॉजिटिव डिग्री. नाउ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द कंपैरेटिव डिग्री. सारे सेंटेंस यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री में है. Rewrite them into the positive degree using as and so as. One has been done for you. So children, the first one is days are hotter than nights. अब nights को हम पहले लेंगे. Nights are not so hot as days. So the next one is Ishan is the fastest learner than Rudra. So अब हम क्या लिखेंगे? Rudra is not so faster learner as Ishan. So we have done 2 questions here, children. The rest of the questions are your homework. You have to complete these questions on your own. Now we can change the superlative degree into the comparative and positive degree. अब हम superlative degree को भी comparative और positive degree में change कर सकते हैं. First is here we can see the superlative degree. The Nile is the longest river in the world. अब इसको comparative में किया तो क्या बन जाएगा? The Nile is longer than any other river in the world. Positive में क्या बन गया? No other river in the world is so long as Nile. Again, the next question is mathematics is the most interesting subjects. अब comparative में क्या हो गया? Mathematics is the most interesting that most other subjects, and very few subjects are as interesting as mathematics. So we have converted all these sentences from superlative to comparative and positive degrees. So like the examples that we have done, we have to complete these exercises also. Some sentences with the superlative degree of adjective are given below. So यहाँ पे जो sentence है superlative degree में है. Rewrite them transforming the adjective into the comparative and positive degree. So children, आपको क्या करना है? You have to write down the heading comparative degree and then write down the answer, and then we have to put the heading of positive degree and then complete the positive degree statement. So as we have done, the examples have the back. Like that only you have to convert these into your positive and comparative degree. So children, this is the work that you have to do on your own. Next, fill in the blanks suitably using each, every, either or neither. One has been done for you. So ये सारे words को use करना है and then we have to complete the exercise. The captain used every trick to break the partnership. So यहाँ पे हमने every use किया है. Now the second one is dash worker was given work according to his ability. So here we can write each worker was given work according to his ability. So children, we have done the 2 questions here. Rest questions are your homework and you have to do it on your own. Now similar questions are given here also. Fill in the blanks suitably with few, a few, much, many, little or a little. So अभी हमें इनको भी use करना है and then we have to fill in the blanks. I know dash of the poor. We have to choose from this a few of the poor. So we have to complete this exercise also that we have completed, like we have completed the other exercises. So this is also your homework. Next is encircle the correct adjective in the following sentences. One has been done for you. So आपको इसमें क्या करना है? Correct adjective को circle करना है. My teacher had many pens and much ink. अब आपको पता है कि many हम कब use करते हैं और much कब use करते हैं. Many for countable and much for uncountable. So like this you have to complete the exercise. Few of his friends were seen asking about his result. Few आएगा या a few आएगा, you have to decide it because we have done so many examples in our book. So children, this also is your homework. You have to do on your own. Now each of the following sentences contain an error and is used in positive, comparative and superlative degree. So जो ये questions दिए गए हैं, यहाँ पे sentence दिए गए हैं, इनमें कुछ ना कुछ error है. और ये कौन से डिग्री में है? ये पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में. रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. सेंटेंस को हमें ध्यान से देखना है एंड देन लिखना है. दिस इज द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बिल्डिंग. अब 2 बिल्डिंग के बीच में कंपैरिजन करना है तो द टॉलेस्ट लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ पे लिख दो द दिस इज टॉलर देन द दिस बिल्डिंग इज द
is taller than the other building. So here we have done change this into the comparative form. So like the first one we have done here, children. The rest of the questions are your homework. You have to do alone. And by this we have completed the chapter, and it was very interesting chapter. We have learned many new points in this, and I hope that you have understood the chapter. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.